तो भाई the most anticipated game of the round of 16 is here. Portugal versus Spain. Will this be the last game in Portugal colors for Cristiano Ronaldo? I mean, honestly, this is like a final before a final. बेसिकली वही है. बात करते हैं दोनों टीम्स की पोटेंशियल लाइनअप्स. तो इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स आई थिंक इट्स प्रिटी ऑब्वियस. मिडफील्ड दोनों के probably the best two midfields in the world right now है, at least on paper. Obviously पोर्चुगल का मिडफील्ड उतना कोई अच्छा नहीं खेला अभी तक इन द वर्ल्ड कप, बट आई वुड से कि स्पेन का मिडफील्ड भी कोई खास नहीं खेला अभी तक. दोनों ही टीम्स प्रेफर करती हैं कि बॉल उनके पास हो, तो इन दैट सेंस दिस कुड बी अ वेरी केजी गेम. एंड ऑनेस्टली इट रियली डिपेंड्स कि दोनों में से कौन सी टीम ट्रांजिशन पे बेटर खेल पाएगी, जो कि मुझे लगता है कि वुड बी पोर्चुगल. एंड I'll come to that point as well. So पहले स्पेन के बारे में अगर डिस्कस करें, I think it's pretty obvious that their best player has been Cucurella. And the outcome of this match really depends कि पोर्चुगल कुकुरेया का अटैक में जो इफेक्ट है वो कैसे नेगेट कर पाती है. आई थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज हर बार अभी तक नेटो को प्रेफर किया है उसने, बट आई थिंक इन दिस मैच कॉन्सेसाओ वुड बी अ मच बेटर मैचअप अगेंस्ट कुकुरेया, especially क्योंकि उसका वर्क रेट ज़्यादा है. एंड इफ दे स्टिल वांट टू गो विथ कैंसेलो ऑन द राइट हैंड साइड, राइट, तो दे नीड समवन विद अ वेरी हाई वर्क रेट ऑन द राइट हैंड साइड जस्ट टू मेक श्योर कि कुकुरेया जब अटैक कर रहा है तो वो अटैकर भी उसके साथ ट्रैक बैक करे. एंड ऑल्सो वी नो कि कैंसेलो एज elite he is in attack, he always has that mistake in him, especially in the defensive part. एंड कुकुरेया इज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो वो सामने वाली टीम से ना वो गलतियां निकलवाता है. बहुत ही प्रोवोकिंग टाइप ऑफ प्लेयर है. तो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि पोर्चुगल उसको कैसे नेगेट कर पाती है. एंड ऑब्वियसली यमाल. तो सो नोनो मेंडेस वर्सेस यमाल वुड बी द सेकंड की बैटल. आई थिंक सो फार इन द चैंपियंस लीग जब PSG वर्सेस बार्सा हुआ था एंड द फाइनल ऑफ नेशंस लीग, आई थिंक मेंडेस हैज द अपर हैंड, बट उसके बावजूद आई डोंट थिंक मेंडेस का डिफेंसिवली उतना कोई खास वर्ल्ड कप गया है ये. बट रियली इट जस्ट मैटर्स हु स्टेप्स अप ऑन द बिग गेम्स एंड बिग मैचेस. तो आई थिंक यमाल एंड कुकुरेया, as long as Portugal is able to minimize their roles, especially in attack, I think Portugal has a much better chance of winning this game. Second thing, as much as Portugal likes to keep the ball, I think उनके chances काफ़ी better होंगे if they decide to play on the counter, because I just don't think पहली चीज़ तो कि स्पेन उतना पेसी अटैक है उनका एंड उतने क्विक है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इन ट्रांजिशन एंड ऑन द काउंटर. आई मीन पेस है ऑब्वियसली, बट यमाल बहुत ही रेयरली बॉल लेके 40-50 यार्ड का वो डैश करता है. I think he's always looking for the opportunity for runners and providing them that pass, usually as outside of the footballer, right? And Oyarzabal is not the most pacey striker, right? Baena is also not the most pacey attacker in the world. Almost, मतलब decent speed है, but I think Portugal के पास वो speed ज़्यादा है, especially if they play Leao on the left and Conceição on the right hand side. I think Portugal would have a much better chance if they just sit back and let Spain have the ball. I think defending that would be easier as well. And in terms of Spain, so basically I don't think Spain would change anything about their game, right? They will want to keep the ball. They'll try to control the tempo as well. Spain का game कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है अभी तक. Obviously Austria के against they were much better, but they haven't been at their full throttle yet. So I think I at least personally think that Portugal has a much better chance in this game than maybe what some others would be saying right now. Even though I want Spain to win, but I still think Portugal has a much better chance. And पिछले 5 मैचेस भी अगर देखा जाए तो उनमें से 4 रेगुलर टाइम तक ड्रॉ ही रहे. एंड जो एक मैच था दैट स्पेन वन आई थिंक इन द नेशंस लीग गेम था वो कुछ 1-0. तो क्लोज मैच रहते हैं इनके हमेशा. एंड ऑनेस्टली आई थिंक इफ पोर्चुगल कैन कंट्रोल और लिमिट द इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम कुकुरेया एंड यमाल, आई थिंक दे विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ बीटिंग द स्पेन टीम.
even though they haven't conceded in a very long time. But motivation that the Portuguese player might have, knowing that this could just be the last game of Ronaldo's international career, right? I just think कि वो motivation could maybe just push them a little more to go after this game. Yeah, I think it'll be a KG game. It'll all come down to कि transition पे कौन सी team better है. I just feel like कि Portugal just have more imposing, at least physically imposing players, जो मेरे ख्याल से स्पेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है to handle, especially on a counter. And as long as Yamal and Kukurea इन दोनों को वो चुप रख पाते हैं तो आई कैन वेरी इजीली सी पोर्चुगल गोइंग थ्रू इन दिस गेम. तो आप लोग भी बताइए, व्हाट डू यू थिंक, कौन जाएगा? विल दिस बी रोनाल्डोज लास्ट गेम और नॉट? वेल, आज रात को पता चलेगा. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.